Hi everyone. So there is good news for aspiring and existing RBI Grade B officers. The news is that RBI has further hiked the allowances. तो अच्छी खासी पहले ही CTC थी. They have increased the amount to be given for some of the allowances which will further increase your CTC. तो existing officers के लिए तो ये बहुत अच्छी news है because उनको तो ये मिलेगा ही मिलेगा. But for the aspiring ones, if salary CTC is a motivation, then this can be motivation for you. But I'll tell you कि आप ज्यादा इसके बारे में मत सोचिए. Salary and all is something first of all you will get after your selection, and don't get into the entry cases. इसमें क्या मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा, because at the end of the day you need to realize that you will be able to lead a good, healthy, prosperous life once you get there. अब वो 1 लाख कम है, 1 लाख ज्यादा, that is not going to make any difference. But फिर भी मैं changes बता देता हूँ, right? You might be curious to know कि कहां पे कितना अलाउंस बढ़ा है, ओवरऑल सीटीसी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है. तो दिस इज योर अर्लियर लिस्ट ऑफ अलाउंसेस जो कि एक बेसिक सैलरी और सम काइंड ऑफ डिसेंट अलाउंसेस जो दिए जाते हैं, बेसिक पे, ग्रेड अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, एचआरए. मैंने पिंक में इसलिए रखा है एचआरए को बिकॉज इफ यू टेक लीज अकोमोडेशन फ्रॉम आरबीआई, आई मीन आरबीआई गेस्ट हाउस और आरबीआई फ्लैट्स, then you will not get this. So only if you offer accommodation on your own, then RBI will give you this 75,000. So this is subject to that condition. Then special prerequisite allowance, direct recruitment allowance, compensatory allowance, learning allowance, grade allowance. This is something which is remaining the same. There is no change here. All these allowances, if they add up, they kind of become 2,05,000, which I have shown here. ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा बैनर आ रहा है उसके आगे. But if we add all this up, this becomes 2,05,000. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है. Now there are some monthly allowances जो कि आपको मंथली बेसिस पे दिए जाते हैं. In some of the allowances there is a change. So there is no change in petrol and maid allowance, but internet allowance which was 2,000 per month, now this has been increased to 3,500 per month. Newspaper, landline, Sodexo, all that remain the same. A big increase in equipment maintenance allowance. So RBI basically gives you equipment maintenance allowance so that you can upgrade or maintain your laptops and all. So this has been increased from 500 to 2,000 per month. So that's a huge increase. Then children education allowance, which was earlier 7,000, it has been increased to 13,500. This is allowed for maximum of 2 children. पर यहाँ पे मैंने एक ही अभी assume किया है. ठीक है, so this is also a huge increase and I've kept this in pink because again this is subject to whether you have children or not. अगर आपके बच्चे ही नहीं है, I'm not sure whether you will be able to claim this allowance or not. So this will come in a while and जब तक ये आपको मिलेगा, I think this amount might increase further. But for now, let's take these figures theoretically. So all these allowances, including the increased ones, the total amount in terms of monthly allowance, which was earlier 45,000, now it becomes 55,000 per month. So that is almost an increase of 40,000, 10,000, that is 25%, which is like huge. तो ये आपके monthly allowances में increase हुए. Then there are some yearly allowances which you get on yearly basis, or maybe once in 3 years, once in 2 years, but we have calculated them on yearly basis. तो यहाँ पे बुक ग्रांट और मेडिकल डिक्लेरेशन सेम है. ब्रीफ केस अलाउंस व्हिच वाज अर्लियर 6,500 हैज बीन इंक्रीज्ड टू 9,500. देन फर्नीचर अलाउंस व्हिच वाज अर्लियर 2 लाख was given to you to buy new furniture every 5 years. This has now been increased to 3.25 lakhs every 5 years. So this becomes 65,000 per year. If we divide 3.25 by 5, earlier it was 2 lakh divided by 5, 40,000. So यहाँ पे ईयरली 25,000 का इंक्रीज आया है. देन स्पेक्टिकल अलाउंस 13,000 था, अभी 15,000 हो गया है. दिस इज ऑल्सो अलाउड फॉर योर स्पाउस. तो आप यहाँ पे 30,000 तक क्लेम कर पाएंगे. बट आई हैव जस्ट एज्यूम्ड 1 सेट ऑफ स्पेक्टिकल्स. ये भी मैंने पिंक में रखा है बिकॉज ओनली इफ यू वियर स्पेक्टिकल्स देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लेम दिस अलाउंस. बाकी आप 0 नंबर का चश्मा कभी भी पहन सकते हैं टू क्लेम दिस अलाउंस. तो ये आपके अलाउंसेस हैं जो इंक्रीज हुए हैं. Now, if I sum up these figures, including the increased ones, the total which was 2 lakh yearly allowance earlier now becomes 2,30,000. Again, subject to the condition कि ये आपको हर साल नहीं मिलेंगे शायद, but some of these you would get in a combined manner after 5 years or 3 years.
तो ये कुछ अलाउंसेस हैं जो इंक्रीज हुए हैं। और अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं, 2,05,000 your monthly figure, then 55,000 your monthly allowance, so total becomes 2,60,000 per month, so which becomes around 31,20,000, right? And then 2,30,000 is your yearly allowance, so if you plus this to this, it becomes 32,50,000. So CTC 30 lakhs तो हम बोलते हैं, 30 लाख से भी ऊपर बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ डिसेंट अमाउंट। अगेन आई वांट टू टेल यू दैट डोंट गो थिंकिंग के ये सैलरी बहुत ज्यादा होगी, कम होगी, इसमें मैं ये करूंगा वो करूंगा। द आइडिया इज that you will be you would be able to live a healthy and a prosperous life. That's it. Peace of mind. That's it. Job security. That's it. इन चीजों पे आप सोचिए, ना कि इसकी ज्यादा निटिग्रिटीज में जाइए। वैसे मैंने बता दिया है, इन केस यू आर वेरी क्यूरियस, होते हैं कई लोग, बट आई होप दिस विल हेल्प। अभी ये जो मैंने आपको बताया, ये सारा सुनकर आपके दिमाग में पहली चीज क्या आई? आप मुझे वीडियो को पॉज करके बताइए, ये सारी चीजें सुनकर जो मैंने आपको बताई कि आरबीआई ने ये चीजें इंक्रीज की हैं, आपके दिमाग में पहली चीज क्या आई? अब दो तरह के लोग होंगे। किसी को लगेगा वाह कि यार सैलरी बहुत अच्छी है, which is not a bad thing. Obviously, I mean everybody is working for money. We want to earn good. We have to be ambitious in life. तो हम सैलरी अच्छी है उसके ऊपर हम सोचने लग जाएंगे, we will start dreaming about a life at RBI, गाड़ी घर ऐसा ऐसा, which is not a bad thing. ठीक है, ये अच्छी चीज है अगर आपके दिमाग में ये आई है, बट मैं यही बोलूंगा इसको कंट्रोल मैनर में रखिए। इट शुड नॉट बी लाइक ओवर पावरिंग योर माइंड एंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द सैलरी एंड द पर्क्स एंड द अलाउंसेस, बिकॉज द मेन टास्क इज टू फोकस ऑन योर स्टडीज। सैलरी 1 लाख कम है ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग रन में। मेरे दिमाग में क्या चीज आई इसको देखकर मैं बताता हूं। देखिए सीटीसी तो ऑलरेडी बहुत अच्छा था, 31 lakhs के करीब था। आफ्टर द इंक्रीज इन अलाउंसेस इट माइट बिकम 32.5। ठीक है, एवरी इंक्रीज इन योर सैलरी इज अ गिफ्ट, इट इज अ ब्लेसिंग आई वुड से, बट मैं इसको कोई बहुत ज्यादा नहीं मानता कि इससे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। सो द फर्स्ट थिंग विच केम टू माई माइंड इज नॉट अबाउट कि इंक्रीज कितना है कहां है। द फर्स्ट थिंग विच केम टू माई माइंड वॉज कि यार कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आई थिंक पिछले ही साल उन्होंने सैलरी रिविजन किया था विच वॉज पेंडिंग फ्रॉम ड्यू, अभी अलाउंसेस भी बढ़ाए, सो दे आर कंसिस्टेंटली वर्किंग अपॉन इट। They have this process at their side which ensures that your salary, your benefits, your allowances are increasing with time. They are able to cover the inflation. You are feeling motivated year after year. तो मुझे इस प्रोसेस को देखकर बहुत खुशी होती है that there is a process out there which ensures that आपका जो एफर्ट है it will get paid off. थोड़ा कम होगा ज्यादा होगा, that's a separate thing to be discussed. तो मेरे हिसाब से again I want to stress upon the quality of RBI as an employer, how much caring, how much how much empathy it is having with the employees. That is the point to be noted in my view. बाकी ये सैलरी चलती रहेगी। I mean जो आज से 10 साल बाद ज्वाइन करेंगे they might join at a starting package of 80 lakhs. So ये चीजें चलती रहेंगी। Let's not focus on that. Let's focus on what they are doing in terms of their thought process. वो बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है। और ये एक आरबीआई ग्रेड बी की गाइड बुक है इन केस यू आर स्टार्टिंग नाउ एंड यू आर सर्चिंग फॉर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द सैलरी, प्रमोशंस, हायरार्कीज, अबाउट द एग्जाम प्रिपरेशन। About the exam preparation, you will get the previous year papers here. You will get the detailed book list and resources which you need to use for your preparation. You will get the detailed syllabus, right, topic wise, because even in the notification some of the topics are not given which you will find here. So ये बहुत detailed है and after reading this you will feel that you have all the information now at your disposal. You will not have to go to any website or any YouTube channel. बहुत elaborative है yet very compact. तो आप इसको जरूर पढ़िए, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। I have the hard copy here with me. ठीक है, बहुत अच्छी है, it's very colorful. You will enjoy reading it. तो आप आज ही इसको डाउनलोड कीजिए and you can download this by clicking on the link which is given in the description of this video, and this is totally free. We are not charging anything for this. This is just for value addition on your side. And then we have our courses in case you want to become part of EduTab community. We have our flagship courses, Gold Pack and Silver Pack. Gold Pack is a one
stop solution for phase 1, phase 2 interview. Everything is being curated in this single course without having the need to go outside and read anything, either any book or newspaper, nothing, no website. Then there's a silver pack, which is mainly for phase 2, right? But phase 2 and interview, but you will also get phase 1 GA. So basically, those people who are good in quant, reasoning, and English, they can opt for silver pack in case you just want to focus on phase 2 in assisted manner. And obviously, you would like to build the trust on EduTab first and then become part of our EduTab community. So you can build that trust by going to the description of this video. There is a link. Click on that link, download the sample material, and check for yourself. I'm sure that आपको काफी clarity मिलेगी about our content, how it is quality content and how it is comprehensive. And we would love to see you. We would welcome you here at the community of EduTab. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Love you all.